हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द origin of gram stain, from where it comes? So gram stain was first used by Christian Gram, a bacteriologist, in 1884। ग्राम स्टेन को सबसे पहले यूज़ किया था क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में, जब वो स्ट्रेप्टोकोकाई को देखने की कोशिश कर रहा था lungs sections of pneumonia patient. Then he used gram stain. Gram stain is the most important staining procedure in microbiology lab. माइक्रोबायोलॉजी लैब का सबसे इम्पोर्टेंट और यूजफुल प्रोसीजर जो किया जाता है स्टेनिंग का, वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बहुत से यूजेस हैं, जिसमें से दो मेन है कि ये यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी बताता है और ये बताता है कि वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। मॉर्फोलॉजी में वो बताता है कि कोकाई है या फिर बैसिलाई है। इसके अलावा ग्राम स्टेन also influence the choice of antibiotic because most of the antibiotic act on the cell wall of the bacteria. So gram stain differentiate between gram positive and gram negative bacteria. So the main difference between gram positive and gram negative bacteria is of cell wall. So the results of gram staining are useful for the physician in prescribing the medicine, and it is the most presumptive diagnosis of the bacterial infection. Now, what is the principle of gram staining? First of all, if the bacteria are present in biological sample, when we use crystal violet, all the bacteria will appear bluish or bluish purple. इसके बाद जब हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Then we will de-stain the slide with alcohol or acetone. The counter stain is used, which is mostly saffron in. The gram-positive bacteria will appear purple and gram-negative bacteria will appear pink. Requirements of the gram stain. There are four main requirements of the gram stain. Crystal violet, which is the main or primary stain in gram staining. Then iodine. Iodine solution is used as mordant. It helps the crystal violet to bind with the peptidoglycan of gram-positive bacteria so that they can appear purple. And alcohol or acetone. These are used as decolorizers. And saffronin, which is the counter stain or secondary stain in gram staining process. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बायोलॉजिकल सैंपल, जिसको हमने स्मेयर बनाना है और उसको फिक्स करना है। हीट फिक्स स्मेयर होना चाहिए। हीट फिक्स स्मेयर पे सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे फॉर 30 to 60 सेकेंड्स। उसके बाद स्लाइड को वॉश करना है। क्लीन वाटर के साथ। अगर टैप वाटर इज नॉट क्लीन, यू कैन यूज फिल्टर्ड वाटर और clean rainwater. Then we will put iodine on it for 30 to 60 seconds. Again 30 to 60 seconds के लिए हमने उसके ऊपर आयोडीन डालना है। Then wash the slide. उसके बाद हमने उसको डीक्लोराइज करना है फ्यू सेकेंड्स के लिए विद अल्कोहल और एसीटोन हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्मेयर को कवर कर देना है सैफ्रनिन से for 2 minutes. Then wash the slide with clean water. Then wipe the back side of the slide and उसको हम एयर ड्राई के लिए रैक में प्लेस कर देंगे। Then एग्जामिन करना है उसको माइक्रोस्कोपिकली सबसे पहले 40x पे for staining, for check over staining, and then oil immersion lens at 100 to determine the morphology of the bacteria, whether these are cocci or bacilli or coccobacilli. This is the microscopic view of the gram staining. First of all, we take a smear which contains gram-positive and gram-negative bacteria for our understanding. First of all, we put crystal violet for 60 seconds. All the bacteria will appear purple. Then we used iodine, which is a mordant. It forms a complex with the crystal violet and helps it to bind to the peptidoglycan of the gram-positive bacteria. Then we will decolorize the slide with alcohol or acetone for 5 to 10 seconds. The gram-negative bacteria will leave their color, cannot retain crystal violet stain, while the gram-positive bacteria will retain the crystal violet stain and still appear purple. After it, we will use saffronin, which is the secondary stain in gram staining procedure or counter stain,
for 2 minutes or 90 seconds, and then the gram-negative bacteria will take the color of saffronin and will appear pink, and gram-positive bacteria, as we know, will retain the color of crystal violet and appear purple. Results: as we already discussed, gram-positive bacteria appear dark purple, gram-negative bacteria will appear pink or red. Yeast cells such as Candida will also appear dark purple after gram staining. Nuclei or pus cells will appear red, epithelial cells will appear pale red. Now, in medical terms, gram staining smears are reported as: first of all, we have to mention the number of bacteria, whether they are many, few, or moderate. Then, what we observed, whether the organism is gram positive or gram negative, or whether it is cocci, spherical in shape, or rods, bacilli in shapes, or cocobacilli, or mixed growth. Presence of pus cells, whether pus cells are present or not. And presence of yeast, whether the candida or any other yeast cells are present or not, or epithelial cells can also be identified with gram staining. This is the picture showing the color of the gram staining. Gram positive bacteria appear purple and gram negative bacteria appear pink. Variation or errors in gram staining. gram staining में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव भी नज़र आ सकते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी। वो किन कंडीशंस में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कब अपना कलर लूज कर देते हैं, वो कब क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं कर पाते। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लूज देयर एबिलिटी टू रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट इफ cell wall is damaged. The peptidoglycan is present in the cell wall of the gram-positive bacteria, which take the crystal violet stain and appear purple. If the cell wall is damaged, gram-positive bacteria will not retain the crystal violet stain and will appear pink. And so, when the cell wall is damaged in two conditions: antibiotic therapy or excessive heat fixation. अगर एंटीबायोटिक थेरेपी हो रही हो तो वो सेल वॉल को डैमेज कर देती है एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं कर सकता और वो ग्राम नेगेटिव नज़र आता है। इसके अलावा एक्सेसिव हीट फिक्सेशन और डीकलराइजेशन, अगर डीकलराइजर ज़्यादा यूज़ किया जाए उसकी वजह से भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन नहीं कर पाते क्रिस्टल वॉयलेट को और ग्राम नेगेटिव अपेयर होते हैं। इसके अलावा आयोडीन सॉल्यूशन एक्सपायर हो या फिर टू ओल्ड हो, बहुत पुराना हो, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कलर रिटेन नहीं कर पाते क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का सही से कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया पर्पल नहीं नज़र आते, पिंक नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर स्मेयर जो है वो बहुत पुराने कल्चर से रिजल्ट जो हैं वो गलत आ सकते हैं। नेगेटिव बैक्टीरिया कैन ऑल्सो अपेयर ग्राम पॉजिटिव इफ़ द स्मेयर इज़ टू थिक। अगर हमारा स्मेयर थिक होगा तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर्पल नज़र आएंगे। कंट्रोल्स इन ग्राम स्टेनिंग। कंट्रोल्स हमेशा यूज़ किए जाते हैं अपने स्टेनिंग प्रोसीजर में यूज़ किए गए रिएजेंट्स की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। कॉमनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेफ ऑरियस एज अ कंट्रोल यूज़ किया जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई एज अ कंट्रोल यूज़ किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज why gram-negative bacteria cannot retain crystal violet and why gram-positive bacteria retain the crystal violet and appear purple? The answer is that the main reason behind this is the different in the structure of the cell wall of the gram-positive and gram-negative bacteria. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल हैव अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन, उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन होती है और इसके अलावा उसके अंदर आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता। इसके कंपैरिजन में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिक होती है, हैव नो मेम्ब्रेन, सो gram positive bacteria retain purple color and retain crystal violet dye just because of thick peptidoglycan layer.